Devish, so let's go for your snap interview for environment engineering. Or we are going for interviews in IITs. The date is not yet defined. Okay, Devish, a very brief Yes, introduction from your side in just 30 seconds to 1 minute. uh, my name is Devesh Tomar. I have GAIL score of 598 in civil engineering, and my CGPA is 6.89, and I am passed out in year 2018, Mhm. and I have worked for 1 year as a design engineer in the structure department, uh, and I have prepared for 2 years. I have gap of 2 years actually. So Okay, now I'm seeking admission into good college in MTech. okay, ठीक है. Okay, Devish, tell me what is the role of an environment engineer? Uh, Sir, in which domain you asking? General. Sir, environment engineer have many roles like say there is some. I mean, we have population to cater, so we want to supply water for them. So before supplying, we have to treat water. So the environmental engineer, they design a water treatment plant like the the volume which is required. They calculate that accordingly. They design all this Mhm. process. And after when this water becomes wastewater, so that is also to be treated before discharging. So that's all work an environmental engineering. Okay. Can you tell me what is water supply scheme, Devish? Water supply. What? Water supply scheme? Scheme. Okay. So in sir water supply, see, we have to initially we have to find out what are the sources from where we can collect water, and we can get water. So after analyzing those, uh, and so we try to make the water treatment plant near those locations, and after that we have the water conveyance system. We have to lay all these pipelines through cities so that to every corner of the city we can carry water. So this is all Okay. about. What is the difference between permissible limit and cause of rejection? Permissible limit are, I mean, people can say any, say, take example of turbidity. Mhm. So there is some permissible limit. So people can use that water till a permissible limit. Or if the turbidity limit is exceeding a specific point, so say some value that will have some value. So if that is exceeding that threshold limit, so that will be cause of rejection that we cannot use. So we have to uh, you know we cannot use that. So we have to get. I mean, we cannot use that. Okay. Okay. So tell me what is turbidity? Turbidity, sir, it has a basic definition that some milligram of silica present in water. I don't recall. I'm not able to recall exact amount of that silica, but say around 30 milligram of silica in 1 liter of water. So that is called 1 NTU turbidity. मैं आपसे turbidity पूछ रहा हूँ. I'm not asking you the unit. Turbidity क्या होता है? So turbidity is, I mean, when we see water, if it contains some like if we pass some rays through it, so it is kind of opaque. So we can even see from a naked eye that it is not very clear. So if it is not clear, so it contains some turbidity, like that we say. अच्छा, तो मुझे ये बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप सस्पेंडेड सॉलिड्स पढ़ते हैं और टर्बिडिटी पढ़ते हैं, करेक्ट है? हाँ सर. सो क्या सस्पेंडेड सॉलिड्स और टर्बिडिटी सेम नहीं है? Sir, suspended solids actually they can be removed. Actually, turbidity also can be removed, but suspended solids, if we left water for a few minutes,
So if it contains suspended matter, so it will settle. ओके, It can be सस्पेंडेड सॉलिड्स को कैसे रिमूव करते हैं? sus- sir, suspended solids में actually there are two types. One is set level and another one is non-set level. Set level, and also two other types like organic and inorganic. So if it is a set level, so we can leave it for timing and it will settle. Then we can take remove that part, settle part, and or if you want to remove the organic material, then we have to heat it. ओके, ओके, ठीक है. अच्छा देवेश, मुझे ये बताओ, what are the impacts of suspended solid on drinking water? So if water has some more amount of suspended solids, then actually suspended solids are not required at all in our body. So those are the waste part. Okay. So, yeah. तो इसका एक ही इम्पैक्ट है? और सर इम्पैक्ट सर जैसे if some part our body is not required, if we inhale that part, if we consume that part, so it will obviously cause some trouble. If in more amount, that more trouble will be there. If in less amount, then less trouble. Okay. That is not the actual impact. Okay. कलर को कैसे मेजर करते हैं? सर कलर को we measure by we call Hazen unit. किससे? Hazen. हेजल? HAZEN if I'm not wrong. Hazen. ये क्या होता है? सर I think मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा. मुझे लगा सर कलर की यूनिट जो मेजर करते हैं वो हेजन होती है. ओके. क्या इम्पैक्ट्स होते हैं कलर के ऑन ड्रिंकिंग वाटर? सर कलर के एक्चुअली देयर इज नो such harm impact. The thing is, we don't like to drink water which is colorish. तो क्या कोका कोला नहीं पीते? Sir, Coca-Cola is not water. That is some drink. तो रूह अफ़ज़ा नहीं पीते? सर जो प्योर वाटर हम पीते हैं, that should be clear that everybody wants. अगर उसमें कलर प्रेजेंट है, तो one would hesitate to drink it. So that is why color is to be removed. इसके अलावा कोई और रीजन? नहीं सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा. अच्छा मुझे बताओ, ये वाटर का कलर क्या होता है? सर कलरलेस तो नहीं होता एक्चुअली. मतलब आपके मान लो आपके पास एक कांच का ग्लास है, उसमें आपने पानी फिल कर रखा है, तो आपको कौन सा कलर दिखाई देगा वाटर का? सर इफ वाटर इज इन लेस क्वांटिटी देन इट वुड अपीयर एज कलरलेस. इफ इट इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी देन bluish tint will be present. ओके ओके देवेश, ठीक. अच्छा देखो देवेश, सिंस आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू है, तो पहले इंटरव्यू में तो गड़बड़े होती है, ठीक है? आई विल टेल यू व्हाट आर योर मिस्टेक्स. जैसे सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देने को बोला है, तो इंट्रोडक्शन अगर 30 सेकेंड या 1 मिनट में कोई बोलता है तो आप कैसे देंगे? हेलो, गुड इवनिंग सर, माय नेम इज देवेश एंड आई बिलोंग टू दिस सिटी. उसके बाद में I have completed my bachelor's in civil engineering from this college with this much of percentage. I also completed my 12th and 10th from this college, from this school with this much of percentages. My father is this and my mother is this. That is your introduction. ठीक है? एक्चुअली क्या हुआ कि मैं सर स्नैप के लिए नहीं आया था. मैं एक्चुअली देख रहा था क्या मतलब कैसे फॉलो हो रहा है प्रोसीजर स्नैप का, क्योंकि मैंने इसके पहले नहीं किया था. और ठीक है, कोई बात नहीं. ये इस तरीके से होगा. हाँ, क्योंकि मुझे करना भी था, क्योंकि एक बार जब मुझे अभी मिल गया आइडिया, तो मैं अभी थोड़ा वर्क करूंगा. फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा ही वर्क नहीं किया. मैंने मतलब आपने बोला ऑल ऑफ सडन.
Okay, Shekhar. So we'll go with your SNAP interview for environment engineering. This is for ONGC, Yes, and sir. your date of interview is 9th of April. Yes, sir. Okay. Shekhar, a very brief introduction from your side in just 30 seconds to 1 minute. Yes, sir. I am D. Shekhar Rao. I am from Bhilai, Chhattisgarh. I did my B.Tech in civil engineering from NIT Raipur, and my B.Tech project was in air pollution monitoring. And in the final year itself, I qualified GATE and then joined MTech at IIT Guwahati in environmental engineering. My MTech project was in leachate from landfills, its monitoring and treatment. Okay. So, Shekhar, tell me, when we talk about environment engineering, suppose that you are posted somewhere in ONGC in a remote location, and approximately there are 2000 to 2500 people living over there. Okay. Now there is scarcity of water. Water is not abundantly or very easily available over there. So, Mhm. as an environment engineer, what can be done to provide them safe and enough drinking water without, and also that these people are very poor? As an environmental engineer, what approach you can have? Yes, sir. Since the resources are scarce and that the people are poor, so the best thing they can go with is that they can do rainwater harvesting, through which they can conserve the rainwater which is precipitating over their habitat or area. And if possible, we can go with some treatment options for the surface streams which may be passing through their villages. As of now, I can think of these two solutions. Okay. Not can't we think of tube well or groundwater? Sir, as you were saying, the sources are limited, so I was Okay. thinking that, Yeah. yeah, Okay. if it is there, it's also a very good option. Okay. Okay. Groundwater. Okay. Ajay, tell me what is a hydraulic jump? Sir, there is one parameter Mhm. which defines the flow which is taking place in an open channel. It's called Mhm. fraud number. When it is less than one, we say that the flow is critical. When the flow changes from critical to subcritical, a hydraulic jump happens, in which we see that the height of the flow increases or a standing wave is formed, we say. From critical to subcritical, you are saying. Yes, sir. Okay. Where can we use hydraulic jump in water treatment plant? Sir, I think it provides a very good mixing Mhm. within the water, so we can use it in the coagulation stage where we are adding the chemicals so that it is Okay. uh, rapidly dispersed in the Good. medium. Very good. Can you write the equation of using coagulation when we use alum? What happens? So, yes, sir. Sir, the basic equation would be in the form that the alum. You write it down, please. Write it down and then show it to me. Yes, sir. So, uh, So shall I show this in this way? Al2SO4 with alum reacts with what? Sir, reacts with water to form polymetallic hydrates like AlOH and then AlOH twice. Alum Uh, reacts with water or it reacts with something else in water? uh, Sir, I know that it forms aquametallic Mhm.
cations. So I think it should react with water also. There might be some other thing. Obviously, you are actually mixing coagulant in water, so it is reacting. But there is a specific compound from which this alum reacts. Okay. What are the impacts of alkalinity on drinking water? Yes, the main important feature of alkalinity is that it provides buffering capacity to the water, which is very much needed because human bodies are susceptible to pH changes. So it would act as a buffer against such pH changes if by chance some chemicals get added. Okay. Anything else? Okay. कोई बात नहीं. अच्छा, tell me what is incrustation? Sir, I think in the machineries or equipments which are used in water treatment, the formation of crust layers from CaCO3 are formed at the crevices. I think this should be incrustation. Okay. What is eutrophication? When by chance or due to some factors, various types of nutrition sources reach the water, it causes excessive growth of some plants or algae. This is known as eutrophication. Okay. What are the impacts of eutrophication? Is it bad? Is it good? It is good sometimes in the sense that the excessive of nutrients are getting captured, and it is bad in the sense that it forms a thick layer in the topmost layers of water, so it prevents the sunlight penetration within. And it also provides excessive biomass to the ponds or lake ecosystem. Okay. What is the difference between biomass and organic matter? Are they same? Sir, I'm not getting any difference. Sir. I'm not thinking able to think of any. Okay. Manlo, let us assume that have you heard of cow dung? Is it organic matter or is it biomass? It is a biomass because it also includes some cow bacteria which are found in intestines. Okay. What is sludge age? Yeah, in the treatment units, the biological treatment units, we use the bacteria. Say the time period for which cell resides over the treatment phase is known as its retention time or sludge age. Okay, good. What is its use? What is its application? Its application depends on the maybe the reactor volume can be calculated because the greater the sludge age, we have to accommodate the space accordingly, and it might be related to the growth phase of the bacteria also. Okay, growth phase of the bacteria. Okay. Tell me how acid rain occurs. Due to some air pollutants present in the air, when the precipitation happens, it absorbs some gases into the air, into the water bubbles, so which brings down the pH of the water, hence it is called acid rain. What kind of chemicals? What kind of gases? Mostly it is sulfur dioxide, which gives H2SO4, and nitrates, and NO2 can also give HNO3. So these two majorly comprise the acidic portion. So you mean to say NO2 plus H2O, this leads to HNO3, nitric acid, right? Yes, sir. Okay. Then SO2 plus H2O leads to H2SO4, right? Yes, sir. Okay. Can you balance this equation? SO2 plus H2O gives H2SO4? I can try, sir. Fine, try it out.
Sorry, sir, I'm not getting it. नहीं हो रहा है? ओके, कोई बात नहीं. ओके शिखर, फाइन. Yes, sir. आपने पहले कोई इंटरव्यू नहीं किया? दिस इज योर फर्स्ट इंटरव्यू आई गेस. Sir, YourPedia पे बोल रहे हैं? हाँ हाँ. हाँ सर, अभी पहले. सर मैंने HR दिया है, टेक्निकल में. अच्छा, टेक्निकल अभी पहली बार दिया है. हाँ सर, HR दिया है मैंने बस. अच्छा देखो शिखर, हाँ सर. आपके कुछ कुछ पार्ट बहुत अच्छे हैं, कुछ Okay. कुछ पार्ट नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बट कुछ कुछ ऐसा है जैसे आपने जो वो आंसर दिया हाइड्रोलिक जंप वाला, दैट वाज रॉन्ग. सर कौन सा? क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल नहीं होता, इट इज फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल, है ना? दैट इज फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल. ऑल्दो अब देखो ये जो पार्ट है दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, बट एनवायरनमेंट में सिंस हम वाटर पढ़ते हैं, वाटर ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, तो हाइड्रोलिक जंप, ओपन चैनल, ये सारी चीजें आ सकती है. यस सर. ठीक है. इसके बाद में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, H2O प्लस सॉरी SO2 प्लस H2O gives H2SO4, ये इक्वेशन कभी बैलेंस नहीं होगी, बिकॉज SO2 कभी भी H2SO4 नहीं बनाता. SO2 will first react with oxygen to form SO3. This SO3 reacts with H2O to form H2SO4. This is the exact level of questions that I have asked you ना, ये ONGC के लेवल के क्वेश्चंस हैं. मोस्टली जैसे मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन इम्पैक्ट्स ऑफ एल्कलाइनिटी पूछे थे, जो आपने करेक्ट बताया, दैट वाज आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड इन एमटेक इंटरव्यूज ऑफ IITs. इसमें पूछा गया है ये वाला पार्ट. सो ओवरऑल आपका पार्ट अच्छा है. कल एक बार और आ जाओ, जस्ट कम वंस मोर, एक और बार आ जाओ, एंड देन वी विल सी क्या क्या चीजें कर सकते हैं. थोड़ा सा देखो, कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे आपने एलम वाली इक्वेशन लिखी, वो करेक्ट नहीं थी. दैट इज Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 18H2O. Okay. It does not react with water. That actually reacts with alkalinity present in water. आपने इक्वेशन देखा होगा, Al2SO4 whole thrice dot 18H2O plus CaHCO3 whole twice या CaCO3. ओके. ठीक है, इसके साथ में alkalinity के साथ में रिएक्ट करता है. ठीक है, more or less it is good. आपका पार्ट बुरा नहीं है. अभी if I can give you approximately you are at 6.5 on 10. सिलेक्शन आपका होगा जब आप 8 तक पहुंच जाओगे. लेट्स ट्राई इट वंस मोर. कल एक बार और आओ, अच्छे तरीके से और तैयारी करना, थोड़ा सा और. एंड आई एम टेलिंग यू द सब्जेक्ट्स. एक आपको एनवायरनमेंट तैयार करना है, प्लस आल्सो गो विद OCF, ओपन चैनल फ्लो भी जाना, बिकॉज डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओपन चैनल फ्लो आपका वाटर ट्रीटमेंट में आ जाता है. अच्छा सर, कोई और एस्पेक्ट भी है क्या OCF के जो यूज होते हैं एनवायरनमेंट में? या देखो, हाइड्रोलिक जंप के अलावा आप जितने भी इंटरव्यू लगाओगे, हर बार आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे. एवरी टाइम यू विल हैव न्यू क्वेश्चन. तो नया क्वेश्चन सिर्फ एनवायरनमेंट के अंदर, देयर कैन बी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन, कोई लिमिट ही नहीं है. तो एस्पेक्ट तो क्रिएट हो सकता है. आपके पार्ट पे आप क्या कर सकते हो, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर एंड कि आपको सारे जवाब पता. ये पहला पॉइंट. अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, कीप दिस इन माइंड कि इट इज नॉट नेसेसरी टू आंसर एवरी क्वेश्चन, क्योंकि आपको सारे सवाल कभी नहीं आएंगे. ये इंटरव्यूअर को भी पता है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे ज्यादा सीनियर है, तो उनको आपसे ज्यादा नॉलेज है. वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप कुछ बता देते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग. बाकी ऐसा हो सकता है कि आप ना बताओ. 10 में से 6-5 अगर आप जवाब दे पाए तो दैट इज अ गुड इंटरव्यू, दैट इज कॉल्ड एज अ गुड इंटरव्यू. अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो सिंपली यू से आई एम सॉरी सर आई डोंट. इस तरीके से चलाना. अब इंटरव्यू के अंदर टेक्निकल क्वेश्चंस हजारों तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं. दिस एनवायरनमेंट कैन बी एक्चुअली लिंक टू योर RCC आल्सो. जैसा ओपन चैनल फ्लो है, चैनल बना हुआ है, उसमें कौन सी ग्रेड का कंक्रीट यूज हो रहा है? कंक्रीट का ही बना होता है ना चैनल. तो कौन सी ग्रेड का कंक्रीट यूज हो रहा है? नाउ देयर आर न्यूमरस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. आप सबके जवाब नहीं दे पाओगे. तो कीप दिस इन माइंड. अगर आपसे कोई नया क्वेश्चन पूछते हैं, आपको नहीं आता है, तो सिंपली से आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता. ओके, ट्राई करो कि 10 में से सिर्फ 4 या 5 के जवाब दे पाओ, बट आपके वो जवाब करेक्ट होने चाहिए. इन केस अगर आप किसी क्वेश्चन में मतलब 100% श्योर नहीं हो, तो यू से इट लाइक दिस, सर आई एम नॉट 100% श्योर, बट इफ यू गिव मी परमिशन आई वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई. दैट्स हाउ यू प्रोसीड. ओके. अगर आपका गलत भी होता है तो आपने स्टार्टिंग में बोला है कि सर आई एम नॉट 100% श्योर. ओके. और अगर सही हो जाता है, उसका बैठ जाता है, तो दैट इज अ गुड थिंग. ठीक है. तो दिस इज हाउ इट गोस. कल एक बार वापस से आना.